So hello everyone. I hope you people can you people are able to uh, hear me. Is it? Please drop a message if people have joined here. I can see many people have joined. Uh, so please just drop the comments here so that I can see and I can start with today's live and it would be fun. I know I wouldn't be visible because lights are bad here for now, but yeah, that's it. But don't worry, guys. We will be I will be making sure that everything goes fine. Okay, cool. So, are we okay? Uh, I am a dark guy lover. I'm sorry. Just make sure that आज काम हो जाए. Uh, I will make sure about from next time that things goes well. Uh, is the video is clear enough? मेरा वीडियो थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि वेबकैम ऑन है and yeah, that's it. I believe it's okay. Voice is okay. Able to hear my voice? Please drop message. Okay, so today we are going to start our first EP of this. What we call this? We call it as a uh, we call it as DSA. Okay, and from today we are starting DSA here, and we will be covering every topic. We'll start covering topics from today, and uh, okay, Coder 90480 Sam, it was your own agency. No, I used to had an agency before, but then it get acquired, and now I am working as a uh, product manager in Advertise. Before Advertise, I was working at was. So yeah, that is the story. Nothing to worry about. Okay, so we can start, I believe, है ना? And before we start, you guys are welcome to this channel. Usually, you had seen me on Instagram, and this is my first stream, so there's mighty possibilities that I will make a lot of mistakes. So I will ask for pardon in advance so that you wouldn't make like this. With time, I will learn about these things. Will learn about its tech. The only thing that I know right now is that how to code and how to teach. So for that, I will be making sure that whatever goes, it goes well enough. Cool है? चलो. I will make sure that from next time, if things goes well, I will try to schedule the apartment in a way where I can like have you. I will get my apartment get done so that next time it wouldn't be so this much dark, right? Are we okay? Should we start now? If you are start, drop a chat. Just put yes in the comments so that I can start. I know. Can we start, people? Cool. I tested for my okay. Where's my mic? Here it is. So I tested it uh, for the audio and everything from my device. So as I was muted. So let's get started. Okay, just drop me a message to my WhatsApp community to join. Okay, and the WhatsApp get closed automatically. No, not an issue. So today we are going to start with our topic, that is arrays, and in the prerequisites of this video of this live to attend is that you are known to any language. It could be C, C++, Java, Python, anything. It's completely fine.
You, no matter from what stream you are, you can easily like cap understand these videos and these streams, and you can be able to replicate into your logic. So that's the whole goal. The whole goal behind running this EP is that you had built some logic around your you can build logic, you can do some great coding out of yourself. That's it. That's the goal. Okay, so yeah, that is that's all I want from you people. So let's see, let's get started. I can't see a lot of people. If you are people here, just drop yes or no in the drop box. Okay, we will also making sure that. Okay, coder 9048. What type of interview? Okay, for I am right now. What happened that I was doing freelance for them, so uh, they didn't had to give an interview because they were okay with they knew my skills already. So I got chance to work with them without any DS or anything. So yeah, that was the only case for me. And but usually I have appeared for interviews already. So majorly it depends company to company. When I appeared for the startups, I usually appeared for startups only, and they used to ask dev from me. So yeah, that was the only case. So but anyhow, it's important to know both of the factors because currently the market is on quite rough phase, and this is why it's happening. And okay, no data to display. Why it's happening? Wait a minute. The data got. Okay, I don't know why it's happening. The stream current bitrate is that थोड़ा quality enhance हो पाएगी क्या? I'm trying, man. I'm trying. Enhance. Okay, I believe it must be, it should be better now. Is it better now? Okay, the question is for job interviews. Usually, right now where I'm working, I didn't have to appear for any job. I didn't have to appear for any interviews. Because they were my clients and I was working for them already. Uh, so I was working for them already. I hadn't need to give any interviews. But anyhow, for startups I had appeared a lot of time, and they usually ask for dev. The startups usually ask for dev. Even it's even sure that if you are appearing for early stage startup, they will ask for dev. If you are giving an interview for any mid scale startup or late aged startup, um, you have to appear for dev. Usually you don't have to appear for DSA. You have to appear for DSA. It depends company to company, but for MNCs you have to make sure that you appear for DSA because MNCs always look for DSA guys rather than hiring for some dev guy. But what happens, let's suppose you have an experience of 2 to 3 years in particular tech stack. The MNCs can take you in as on your DSA, sorry, on dev skills. So yeah, they can take you on dev skills, but it's prerequisites that you had worked somewhere for 2 to 3 years. Chances are quite good that you are working for some startup majorly. So yeah, that would be the case. Should we start? Should we start now? Cool. Okay, I have to turn off the video because I believe uh,
I believe the stuff has turned down. Let me check why it is happening today. It's happens. It's for the first time. So cool. Okay. I have. Cool. I tested and it's working. Do let me know in the chats if there is any buffering or anything you guys are feeling, so that I will have idea that there is something going wrong. Okay. Other than that, let's start. Let's start with today's session, that is arrays. Okay. Before array, the prerequisite is that you understand data types. Data types क्या होता है? We have data types. ठीक है? Data types क्या होते हैं? That you have something like in C, C++, Java, you have for integer. We have double, we have float, we have characters, we have strings. Okay, so these are data types. Even it is in Python as well. But the point is that कि Python में क्या होता है usually कि Python में you don't have to depict any data type. uh, it's automatically like it वो automatically ले लेता है ठीक है. Even in JavaScript you just use var let and everything, but data type is always there in the core of your compiler and interpreter. जब भी कोई भी कोड होता है उसके core में होता है. And why this happens? Because either they wants that you मतलब तुम्हें एक बर्तन देते हैं. It's like a storage device or it's like a container where you can fill your data. तो you have different type of container. अगर तुम किचन में जाओगे, तुमने आटा जिसमें रखा होगा वो कंटेनर थोड़ा अलग दिखता होगा, वो बड़ा होगा ठीक है. जिसमें तुम मसाले रखते हो वो छोटा कंटेनर होगा, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे. सो वाई यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स? ऑब्वियसली बिकॉज सबको स्टोर करने की क्वांटिटी अलग होती है. लाइक आटा हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, मसाले थोड़े थोड़े चाहिए होता है. इसलिए हम लोग मसा आटे का डब्बा हमेशा बड़ा रखते हैं, मसालों का डब्बा छोटा छोटा रखते हैं. ठीक है. सो इससे होता क्या है कि यू पीपल कि हम लोग उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट. हम कभी भी आटे में हल्दी नहीं रखते बहुत सारा. अब अलग बात है कि आपके पास बहुत सारा हल्दी है, बट नॉर्मली इन नॉर्मल हाउस होल्ड केसेस एक छोटा कंटेनर जिसमें तुम हल्दी रखते हो, बिकॉज उसकी साइज़ ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है फॉर अ मंथ. हम धीरे धीरे करके उसे यूज़ करते हैं इतू इतू सा. लेकिन आटा हम इतू सा नहीं निकालते, हम इतना सारा निकाल दे एक बार में, राइट? सो दिस इज़ वाई we need data types. The things are similar for data types. This is what I mean to say for storing data, whether it could be integer and double float. ठीक है, तो इन सब का एक अलग अलग साइज होता है. उन अलग साइजेस को हम डिपेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग श्योर दैट थिंग्स गोज राइट फॉर एवरी केस सिनेरियोज. Cool. So let's proceed. We already know data types. If in case you want to go, just I am using replit.com. No, I'm not getting any sponsorship from here, but for supporting me you guys can add a super chat. I would be more than happy. But more or less it's you can use Replit for doing your online codes. You can use you can also use, I believe, VS Code. Okay, I have to verify my. It's not an issue. 3 by 3 are created. Ripples पे चलते हैं. Let me delete it. Let me delete this as well. I am going to use uh, I'm going to use my C++ stuff. So yeah, am I audible to you people? Sure. Okay, my video is lagging. Let me turn off my video. Is it okay now? Is it okay? Uh, stuff. So yeah, am I audible to you people? Sure. Okay, my video is lagging. Let me turn off my video. Is it okay now? Is it okay? Cool. So let me keep my video off
so that it shouldn't give me a lot of super chat. OG, let me put super chat. Okay, sorry guys, had some work. I got a call. Sorry, it sometimes happens, but we'll try to be continue here. Cool. Okay, let's start. So basically, you can see here that I have already a code here that is int a equals to 10 and count a. I can just print run and it will just give me a 10 if I make it float. So it will give me some decimal values, and if I make run, it will give me another 10 value. Although it will also store 10.0, so it will give me a 10.0. That is not possible. Okay, 10.10. Let's do 10.10. It will give me a float value, means it will give me a something called it will give me my what I say, it will give me a value that I'm assigning in decimal. If I make it int, it will just give me 10. Okay, it will just give me 10. Okay, because it's 10.10, it's giving me implicit conversion. Implicit conversion is an error where the value that is given is not of the data type that we have defined. It's happened in C++, and Java. So what we can do, we will just remove this, and when we will run it, it will give me 10. Cool. And this is how data types work. Now let's say I have students. ठीक है, मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई वांट टू डू व्हाट कि आई वांट देम टू कम एंड ओके कम हियर एंड गिव मी योर मार्क्स. अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ले सपोज आई हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स. आई एन टी आकाश लेट्स से, उसको मैंने 90 दिया हुआ है. ठीक है,
एंड लेट्स ओके, सो आई हैव an आकाश, देन मुझे कोई दूसरा बंदा चाहिए, लेट्स से क्रिश इज हियर, एंड मैं क्रिश को मार्क्स देना चाहता हूँ। आई हैव टू डिफाइन क्रिश एंड देन आई एम गिविंग हिज मार्क्स, ठीक है। फिर मैंने किसी और को नंबर दिया, लेट्स से श्री इज योर, आई गिव समथिंग मार्क्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अभी 3 स्टूडेंट्स है, तो इट्स फील्स इजी, बट अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो तो, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हो तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट पार्ट, राइट? इट वुड बी अ डिफिकल्ट पार्ट where it would be it would be uh, a bit of difficult part for me, क्योंकि मेरे पास इतना सारे डेटास हैं, ठीक है। सो मेरे को एक एक करके पहले तो रन करना पड़ेगा, राइट? It's at like Krish is here and we have Shri is here. We can do this, right? So we have Krish, two Krish in chats. So I will drop Krish OG. Cool. So yeah, Krish OG. So we will make this things assure that this things comes and go along. But problem क्या है कि अभी 3 स्टूडेंट्स है तो हमने बना दिया, but let's suppose there are 50 students, 100 students, then what we can do? And that is the difficult part, that we can come along any day, anytime. अब obviously we are making real time users, we are making real time softwares, and real time software में आप हर data के लिए you can't define something like this, okay? You can't define every single variables and you start giving them the value, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें print करने के लिए तुम्हें एक एक करके print करना होगा, right? So what is the solution for us? And the solution is that we will have a very big box. हमने क्या किया, ले सपोज हमें शिफ्ट करना है, ठीक है, हमें शिफ्ट करना है। Okay, there are multiple Krish in the chats I can see. So again, Krish OG, Krish OG, Krish OG, Krish OG, Krish OG, Krish OG, Krish OG. Cool है। uh, ठीक है, नाइस। सो लेट्स से व्हाट वी कैन डू नाउ इज दैट कि अब मेरे को ये सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, लेट्स सपोज हमें शिफ्टिंग करनी है, वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेनर्स, लाइक हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। हमारे पास जब बहुत सारे कपड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सूटकेस लेते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं। वी इफ वी हैव एनीथिंग वी कैन वी लाइक सूटकेस, हम सूटकेस में लेते हैं, हमारा जो बहुत सारा कपड़ा है हम उसके अंदर डाल देते हैं, राइट? सो दैट व्हाट वी डू। सो हमारे पास सूटकेस, हम इस इधर कैसे बना सकते हैं, एरे वुड बी अवर सूटकेस। एरे क्या होता है, एरे कंपार्टमेंट्स देता है हमें अलग अलग, दैट वी डिफाइन, ठीक है। इट्स लाइक we are having a very big storage, we are having a very big storage and we can use it like this, और हम उस कंपार्टमेंट में अपने डेटा रख देंगे, हमने उस कंपार्टमेंट में अपना डेटा रख दिया। नाउ द थिंग इज दैट यू कैन सी, अब मैं इसके अंदर अपने वैल्यूज रख सकता हूँ, राइट? 10, आई हैव अनदर वैल्यू, ठीक है, आई कैन हैव अनदर वैल्यू एज वेल। फिर उसके बाद भी मैं एक अलग से वैल्यू दे सकता हूँ, उसके बाद भी मैं अलग से वैल्यू दे सकता हूँ। तो आई हैव नाउ वन complete set of what you can say, a complete one set of suitcase where I just have to bring this, मुझे कहीं पे भी जाना है मैं इसको लेके जाऊंगा, rather than मैं एक एक डेटा को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लेके आऊँ, राइट? इट्स अ tedious task. So what we did, we defined array, जो जिसमें हमारा बहुत बड़ा कंटेनर है, एंड दैट होल कंटेनर मेक श्योर कि हमारा जो भी है सब कुछ वो हमारे साथ 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 चले। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग arrays. So we understood arrays. Let's make a note. Make sure तुम लोग अपने साथ अपनी नोटबुक लेके आए हो एंड पानी वानी लेके चलो, क्योंकि इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग सेशन फॉर यू पीपल। सो अपने साथ नोटबुक रखना, पानी रखना। कूल है, let's begin. Is my voice clear to everyone? Is there any issue? Is there any issue? You can drop in the comments so that I can continue.
लेट मी डू वन थिंग फॉर यू पीपल, लेट मी रिमूव दैट कैमरा वाला फ्रेम। जब तक तब तक तुम लोग कमेंट करो, क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है? Okay, voice is clear, but there is a delay. Okay, give me a minute. Mm-hmm. Let me do one thing. Browser screen, no. Stream. Cool. Let me remove it. Yeah. Okay. Cool. Uh, I believe the things would be clear now. I think there would be no delay from now onwards because I have cleared the garbage from here. Right? Is it okay now, people? For you? For you all people? Is the voices still delayed? देखो यार, आज फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम डिफिकल्टीज दैट आई वुड बी गोइंग ऑन, बट ठीक है। सो अब हमने एक चीज़ देखी, वी हैव मल्टीपल एरेस, राइट? वी हैव मल्टीपल एरेस, वी हैव मल्टीपल डेटा इन एरे। सो अब हम नोटबुक्स में लिखते हैं इनके नोट्स, राइट? एरे इज static. Array is what array is? Array is uh, static data type. Okay, static data structure. Static data structure का क्या मतलब होता है? That when I am running it, I can't change my arrays का number. ठीक है? I can't change it. कि basically I had changed it so that it could give me, it could be something like uh, okay, it's something like if I had made it, I can't change it in runtime. Runtime मतलब समझते हो, जब मैं चला रहा हूँ सर, रन टाइम, रन चलते सब, चलना, टाइम मतलब टाइम, वक्त, तो चलते वक्त। तो when I am running the application or running my soft program, then I can't change it because what it is static. So I can't do anything about it. So I will say array static data structure. Okay, then uh, what we can say about array? What else I can say about array is that they could be multi-dimensional. Okay, that could be something. uh, okay, I have something. An array is a collection of data storage. Let me copy paste it for you people so that it won't take long. Okay, an array is a collection of data storage location. Okay, each having the same data type and the same name. What it means कि if here is 10, जो एक integer value है, so I can't put 10.1 here. ठीक है? It's technically not gonna happen क्योंकि you can't change integer then float. So what we do, if we are making integer, then we can only store integer in this value, right? So array is a collection of data storage locations, each having the same data type and the same name. So we can't change, and because we have defined this, अब इस पूरे array का एक नाम होगा, ठीक है? We will provide some name. Let's suppose marks. मार्क्स इस पूरे एरे का नाम, तो सबका नाम मार्क्स ही होगा। एक्सेस कैसे करेंगे हम उस पर बात करेंगे, डोंट वरी। अगर भैया यार ये तो सबका ये सबका वो है, बेसिकली आई विल से कि भैया मेरे को ये सेकंड वाले यूज़र का मार्क्स लेना जिसका 20 है, कैसे करूँगा मैं? मार्क्स थोड़े बोलूँगा क्योंकि यहाँ से तो सबका डेटा आ जाएगा, मुझे अलग अलग डेटा चाहिए सबके, ठीक है? इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट 30 आई कैन गेट 30। सो वॉट वी कैन डू हियर इज दैट इन सबका लोकेशन होता है। लोकेशन कैसे होता है? एरे हमेशा देखो, कंप्यूटर साइंस में एक चीज हमेशा याद रखना, इज दैट एवरीथिंग एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दिस इज नॉट जस्ट ओनली फॉर योर एरे बट एवरीथिंग, ठीक है? तुम्हारा कुछ भी शुरू होता है इन कंप्यूटर साइंस, द थिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इट्स नेवर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वन, इट्स ऑलवेज जीरो।
नॉट वन, इट्स ऑलवेज जीरो, रिमेंबर दिस। तो ये हमारा जीरो लोकेशन पे 10 है। फिर ये अगर हम आगे जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट लोकेशन, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। एंड सेम अगर हम आगे जाएंगे तो ये हमारा सेकंड लोकेशन है, राइट। ऐसे 3 4 5, 3 4 5, this is how our arrays work, this is how our arrays work, making sense? Yes, index value, these are index value. If we want to access anything, then we these are the index value, okay। अब मेरे को let's suppose मेरे को सेकेंड वाले ये वाले तो तीसरे बंदे का वो करना है, एक्सेस करना है वैल्यू। सो हाउ आई कैन एक्सेस द वैल्यू, इट्स सिंपल, इज दैट I will just do one thing, I will go marks, I will I will have something like this, ठीक है। ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू को लेता है। इफ आई पुट 3, सॉरी इफ आई पुट 2 in this, so what I will get, I will get 30, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्क्स, भैया मार्क्स में जाओ पहले, ठीक है। मैं मार्क्स में आ गया, मेरा जो पूरा एक स्टोरेज है उसके अंदर मार्क्स में आ गया। मैं अब 0 से गया, 1 पे गया, 2 पे गया, राइट। So now the thing is that I want to make sure that 0 1 2 सेकेंड पे कौन सी वैल्यू, 30, 30 प्रिंट कर दो। This is index value, okay, this is called index value। Let's try to understand this in code। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 3 लोगों का मार्क्स है, I don't want to print them like this। So what I did, I define my array। अच्छा, array एक derived डेटा टाइप होता है। डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब ये होता है जो डेटा टाइप डिफाइंड होती है, ठीक है, जो डेटा टाइप डिफाइंड है। सो हाउ आई विल डिफाइन इट, सॉरी माय बैड। सो लेट्स से मेरे पास मेरे को 4 डब्बे चाहिए, ठीक है, मेरे को 4 डब्बे चाहिए। मैं एरेज गया, मेरे को एक, लेट्स सपोज यू एवर वेंट फॉर सूटकेस खरीदने या कंटेनर खरीदने, तो मेरे को ऐसा होता है कि जैसे पानी की बोतल, तो मेरे को यार इतना पानी तो चाहिए, मतलब 1 लीटर पानी तो ले ले, 2 लीटर पानी तो ले ले, ठीक है। या मेरे को 20 लीटर का पानी का बोतल चाहिए जो कि मैं 2 3 दिन चला सकूँ। वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग। तो मैंने इस वाले एरे में ये बोला कि मेरे को एक एरे दो, इसका नाम हमने एरे रखा है, लेट्स गिव इट अ नेम मार्क्स, ठीक है। मैंने इसका नाम मार्क्स रखा। ये एरे, ये पूरे के पूरे कंटेनर का नाम, लेट्स डू दिस साइड बाय साइड, इसका नाम मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है। इस वाले कंटेनर का नाम हमने क्या रख दिया, मार्क्स, मार्क्स, एंड देन वी हैव डिफाइंड हियर। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 4। सो अब मैं इससे ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इसमें 4 वैल्यू रखने की स्पेस चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 4 वैल्यू रखने की स्पेस चाहिए, 1 2 3 4। लेट मी मेक इट स्मॉलर, 4। तो मैंने इनको बोला 4 वैल्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने इन चारों की जगह कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी, 20 80 90 एंड 100 से, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, 20 रख दिया यहाँ पे, 80 रख दिया, सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले पे मैंने रख दिया 90, और फोर्थ वाले पे रख दिया 100, राइट। सो दिस इज हाउ व्हाट आई डिड। भैया मैं सेम टू में हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा सा आप C++ पढ़ा देना। कूल है। स्टार के किस किस को C++ करना, लेट मी स्टार्ट अ पोल। Not today, because we had started with our DSA session, we will go for C++.
Give me answer in the poll. Give me answer in the poll, guys. Give me answer in the poll. चलो ठीक है, ऐसा है तो प्लीज पोस्ट CPOG। जिसको सीखना है यार ये कमेंट कर दो, सो दैट आई कैन गेट, आई विल have either recorded session or live session। recorded session majorly because I don't have a lot of वो bandwidth, okay, but we got 100% of, okay, we just got only one vote, but ठीक है, got it, not an issue। let's start marks। so we have marks। अब marks में मैंने क्या किया, because what I told, हमने 4 वैल्यू मांगी, बट हमारी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, द इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो लोकेशन मार्क 0 पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 20, राइट। मार्क मार्क्स के फर्स्ट लोकेशन, दैट दिस, ये कौन सा लोकेशन है, फर्स्ट, और इस पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 80, एंड फिर उसके बाजू में सेकेंड, 2, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, ठीक है, मतलब हमें सेकंड के लोकेशन पे 90 मिलेगी और थर्ड के लोकेशन पे 100 मिलेगी, तो ऑलवेज, सो एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट जितने होंगे, उसका n-1 क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू। मतलब तुम्हारे जितने एलिमेंट होंगे उससे एक एलिमेंट हमेशा क्या होगा, कम होगा इंडेक्स वैल्यू का। मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस, मेक सेंस गाइस, of course it should make sense। so it will be making sense that okay, मेरे पास अगर मैं अब एक एक करके इसको वो करता हूँ, काउंट, and let's say marks, and what I did, 0, and I printed। so if I run it I will get 20, if I make it 1 we can do 80, if we want 90 what we will do, we will just put 2 and we get 90, right। but still भैया द प्रॉब्लम इज दैट, आकाश द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अभी भी वही चीज कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। क्या क्या कर रहा हूँ मैं बार बार ऐसे ही तो लिख रहा हूँ, तो मेरे को पहले और इसमें क्या डिफरेंस मिला, मैं बस हाँ चलो ठीक है मैंने एक डेटा टाइप में सब कुछ स्टोर कर दिया, ठीक है, दैट्स ग्रेट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं इतने सारे डेटास को एक बार बार क्यों लिख रहा हूँ, राइट, you are completely right। so what we had use of count for printing, it's like printf, it's printf, printf of cpp, ठीक है। काउट मतलब कैरेक्टर आउटपुट, ठीक है, कैरेक्टर आउटपुट डॉट काउट, COUT, ठीक है। सो वी गेट COUT मार्क्स। अब भाई आकाश जब प्रॉब्लम इज दैट कि हम वापस वही करें, तो हमने एक बहुत प्यारी चीज़ पढ़ी होगी, जब भी हमने जब भी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, तब हमने एक चीज़ सीखी होगी, लूप्स, राइट। सो वी हैव लर्न अबाउट लूप। तो लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप लगाएंगे हम, int इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन, मेरे को कितने बार I को चलाना है, बिकॉज आई हैव मार्क्स एज अ 4 वैल्यू, आई विल गिव 4। अच्छा मैंने लेस देन क्यों दिया, मैं लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं दिया, द पॉइंट इज दैट क्योंकि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज फॉर 3, तो 4 का लास्ट छोटा डिजिट क्या होता है, 3, तो आई वांट कि 4 से छोटे नंबर तक चले, दैट कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, 3 तक चलेगा, नो डाउट, ओके। बट अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ नहीं पाया भैया कि मैं को 4 क्यों लिखना है, मैं इधर 3 भी लिख सकता हूँ, 3 लिख दो, इक्वल्स टू 3 लिख दो, लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट, और यू कैन राइट लेस देन 4, इट्स ऑन यू। मैंने ये किया, फिर मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ, आई प्लस प्लस मतलब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ अपने उसको, राइट, एंड आई विल जस्ट काउंट। अब फॉर दिस आई होप यू गाइस नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो लूप कैसे वर्क करेगा, मार्क्स है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई, गिव मी अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट।
Sorry guys, this happens. I have some commitments as well, so I have to keep going there. But anyhow, let's go forward. मार्क्स आई है तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स कर रहा हूँ, अब मैं एंड लाइन कर दूंगा बिकॉज आई वांट एवरीथिंग ऑन द न्यू लाइन, दैट इज सी प्लस प्लस सी का। तो अगर तुम सी में ये यूज़ करते हो तो दिस इज फॉर न्यू लाइन। इन सी प्लस प्लस वी यूज़ एंड लाइन, ऑल्सो यू कैन यूज़ दैट, बट दैट्स नॉट फॉर अवर कंसर्न। तो लूप चलाना हमें आना चाहिए फॉर स्टार्टिंग विद दिस प्लेलिस्ट। नहीं आता, डोंट वरी, सी प्लस प्लस में मैं ये भी सिखाऊंगा, द रिकॉर्डेड सेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट will have this also. Okay, so let's do this, and if I play run, I will get 20, 80, 90, 100। यहाँ पे no matter what मैं कुछ भी डाल दूँ, अब 110, 120, ओके कॉमा देंगे, 120, 140, why it's giving me error by the way, escape access element, okay, 150, and I have given it 10। अब मैं ये सब यूज़ कर सकता हूँ, राइट, आई कैन यूज़ दिस ऑल डेटा। मैं यहाँ पे खाली आई की वैल्यू क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, एंड आई विल जस्ट रन इट, एंड आई गेट 0 0 बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन 9 and 10, so I will just make it 8, and if I run it, and I will just make it 8 as well, if I run it, I will get all the data, ठीक है 8। so this is what array मतलब, अब रन टाइम मतलब समझ लो, रन टाइम में बात ही हो रही है कि इफ आई एम मेकिंग दिस, इफ आई हैड मेड इट्स ऑलरेडी, कि मैंने 8 तो पहले ही डिफाइन कर दिया। देयर इज अनदर वे, लाइक तुम रन टाइम में एरे में वो डालते हो, एन वैल्यू डालते हो, वो भी उस पे उस वाले केस पे भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरे मैंने 8 वैल्यू दी है तो मैं 8 वैल्यू ही डाल सकता हूँ, अगर इसके आगे जाऊंगा so I will get an arrow. You can see here red line, access element in a array's initializer. So this is what proving our second line is, the first line is that array is static data structure. Array is static data structure मतलब you can't actually have, uh, you can't make changes in runtime, you can't increase or decrease the length of the array while it's running, while it's getting compiled. Okay, does it make sense? Is it making sense to you people? Right, is it making sense? Just put yes, yes, OG put karo so that I can get if you are guys understanding. Are you guys understanding what I mean to say here? Right. Thank you, Vipin. Vipin is here in the chat. I'm so happy to see him. Thank you for the support, man. Thank you for the support. It means a lot. People are here. Crazy nice, crazy nice. Vipin is here. I got my, uh, I got emotionally thoda sa motivated now. So let's go forward. Let's try to be, let's try to make more sense. अब हम एक चीज़ और करते हैं। अच्छा भैया, मैंने एक कोड बनाया है, देयर पॉसिबिलिटीज द रीज़न जो अभी लाइव में उनको आता होगा, या फिर एक चीज़ और होगी, या जो रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो उनके पास भी होगा कि भैया मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि मैंने एक आई एन टी एन डिफाइन कर दिया एज अ ज़ीरो, एंड मैंने क्या कर दिया, सिन करके एन कर दिया, राइट, अच्छा सॉरी, एन कर दिया, मैंने इनपुट ले लिया, एंड लेट्स कॉल इट, लेट्स से काउट enter length of your array. Let's put your length of your array, right? And I just, okay, let's not do this, yeah, let's do this end line, cool है। अब मैंने क्या किया यार आकाश, मैंने तो यार ये कर दिया int marks, इसके अंदर मैं n कर दूंगा और मैं एक लूप चला दूंगा, ठीक है, मेक सेंस। मतलब हमने पहले क्या किया था, इसको हमने डिफाइन किया था खुद से, बट नाउ वी आर आस्किंग यूजर्स टू डिफाइन द नंबर, तो मैंने n में जो भी दूंगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, फॉर int I equals to 0, I is less than what, n, and I plus plus, and I will just ask sin I, right, oh sorry,
mm, I'm making something difficult. I might, okay, say end. Okay, I have to make one more thing. int output, int input. ठीक है, अब मैंने एक इनपुट बना दिया. Let's define a zero so that it doesn't take garbage value. I hope you understand the garbage value input. And I will do nothing. I will just do marks I equals to input. ठीक है. There is an issue equality okay, I just have to give one single. It happens because I am very fond of this JavaScript wala scene, so I'm sorry. No, I don't have any delay in my stream. I don't know why it's happening. Is it in the chat or is it uh I don't know why it's happening. It's if it's there, it's in stream. 1 मिनट का डिले है. Delay in what? In chats? What is getting delayed here? In is it chat or is it voice? Is it not going with the video that I'm streaming? Let me test once. Let me test. Okay, I confirm. I confirmed. It's okay. It's actually what happens, Stark, here is that key basically whenever I'm making sure, whenever I'm saying the live stream is always delayed a bit. Okay, so basically I can see your chat instantly because I didn't added delay in the chats. But it's if it's like I'm actually not taking care of your chats anyhow. So it's happening because cool. I don't know how to add chat in the screen. Let me see if I can add chat going with me. It happens because live stream में हमेशा थोड़ा सा delay रहता है. But I can because I'm not having any delay in chats. By the way, वो by default रहता है कि you should add a delay in the chats if you want. But I don't know why I hadn't added. Let me do one thing. I can just also I'm seeing your chats बीच में not constantly. I'm watching your comments, so it's because now I can see your comments as well. I have added it here. Cool. Ab don't worry, I can see your comments as well because I have added one more device here, so that it wouldn't be an issue for me now. Cool. Let's go guys, let's go. This happens, sorry for it. I'm learning the live streaming wala stuff right now, so it will take time, but thank you people for being here, being alone with me. Cool. Let's go again and let's go further and let's see कि what to let's say. हाँ, हम लोग यहाँ पे थे. अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि यार आकाश आकाश यार मैं तो ऐसे भी कर दूंगा, तो अब क्या होगा, मैं रन करूंगा और मैंने लाइन दे दिया ले सपोज 8. मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दिया. सो देख रहे हो आकाश, मैं तो यार रन टाइम में भी वो कर सकता हूँ. लेट मी ऐड.
यार आकाश यार मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ. The thing is that like I have this type of students here जो मेरे को कहते हैं कि आकाश यार मैं तो ऐसे करूंगा, मैं आर्ट डालूंगा, अब देखो रन टाइम में चेंज हो गया, राइट? तो आपका डेफिनेशन तो गलत हो गया. द आंसर इज दैट द थिंग इज नॉट सपोज टू कंसीडर्ड लाइक दिस. व्हाट हैपनिंग हियर कि अगर मैंने आर्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको आर्ट कर दिया, अब मैंने सपोज मैंने चार करता हूँ, मैंने चार की वैल्यू दी, अब मैं मतलब चार वैल्यू डाल सकता हूँ. व्हाट हैपेंस अगर मैं पांचवी वैल्यू डालूं? You can see here after 1 2 3 4 because I added fifth, it's told me a garbage value. Always depends on compiler to compiler. Like we are using a different compiler that is on Replit. If you are using another compiler, it must be showing you something like error. Error could be there. So what happens here? What happens there that because it throws an error, sometimes your compiler can throw a garbage value. So it's showing me a garbage value. इसका मतलब क्या है? Let's try to understand again. अब मैं यहाँ पे चार वापस देता हूँ, चार. मैंने यहाँ पे छह वैल्यू डाली. You can see a garbage value. Why it's happening? Why it's happening? Because it's what supposed to not do, because we are saying static data structure, because it can't be changed in runtime. अगर मैंने चार बोला है तो मैं चार वैल्यू ही डाल सकता हूँ. मैं दो वैल्यूज डालूंगा तो मेरा कोड बहुत गंदा बफर देगा. It's either it will give me a garbage value or either it will give me something that is unacceptable, right? So we have to make sure about this. So this is why we are calling it static data structure. Make sense? Understood यहाँ तक? Okay, this means a lot. People understood. Yeah. So let's proceed further. Let's proceed further, guys. Uh, अब हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. सो हम क्वेश्चन करने के लिए हैकर रैंक चलते हैं. ओके, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. Okay, give me votes. If I'm getting yes, I will start doing HackerRank for you. We will solve few questions on HackerRank related to arrays, and we will try to understand how it's happening. Right? हमने ट्रैवर्सिंग सीख लिया, तो हम ट्रैवर्सल के ऊपर हम और क्वेश्चंस देखेंगे. तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रैवर्सल.
ठीक है, जो भी हमने किया इसको हम बोलेंगे ट्रैवर्सल लूप, इसको हम ट्रैवर्सल ऑफ एरे एरे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे भी काफ़ी चीज़ आती है, sorting and every stuff, but for now we can and okay, let's end this here, and we have got one board for HackerRank. Let's start HackerRank. Okay, let's do this. Mm-hmm, 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 mm-hmm. तो हम हैकर रैंक चलते हैं। आई बिलीव मुझे शायद नया अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले अकाउंट पे नहीं है मेरा हैकर रैंक। सो लेट मी टू साइन अप। आई एम हियर टू प्रैक्टिस एंड prepare. We will be solving lead code questions, but lead code questions would be a bit uh, okay. I have account already. Continue with Google. Okay, let me just do continue from GitHub. I feel if it's logged in from my GitHub, no, it's not logged in from my GitHub. Let's do this for GitHub directly. तो अब हम हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कितने क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग इट डार्क बाय डिफॉल्ट, मुझे बहुत पसंद है डार्क। एंड या कंटिन्यू प्रिपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पे ही हम आएंगे एंड लेट्स सी दैट वी कैन सॉल्व एरेस को क्वेश्चन। Simple array sum. Let's do simple array sum here. Can we make it change theme dark? Yeah, nice, cool. So let's try to understand the question first. Okay, let's try to understand the question first. Please drop HackerRank OG if you are solving with me. Comment HackerRank OG. Okay, nice. We have one viewer till now, but let's do this no matter what. Let's keep it like this. We'll solve it anyhow. ठीक है, given an array of integer, find the sum of its element. That is, for example, if the array is 1 2 3. ठीक है, अगर हमारा array जो है वो 1 2 3 पे है and we have to define 1 plus 2 plus 3, that is 6. So return 6. अब the problem is that कि हम यहाँ पे C++ में तो we are using vector array. That would be a bit नहीं, हम एरे की तरह इसको वो करते हैं। वेक्टर क्या होता है इसको अपकमिंग स्ट्रीम में समझेंगे व्हेन वी आर लर्निंग इन सी प्लस प्लस। आई विल मेक अ वीडियो ऑन सी प्लस प्लस, देन यू कैन सी दैट what's happened in vector, but let's change it. Let me change it C प्लस प्लस से C में for you people. ठीक है, let's do this in this. So we have int array count. So you can see what we are getting sample input. Sample input क्या 6. 6 is what? Size. We are getting size and then we are getting 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10 plus 11. So what is happening, what they are asking कि मेरे पास एक array है उसके अंदर elements है, उस elements का मुझे sum देना। that is simple, 1 plus 2 plus 3, that is 6. so return 6. So function का description लेते हैं, complete the simple array function, that is this. In editor below it must return the sum of the array elements. Sum of an array elements has the following parameter. क्या है? array of integer, that is this, right? तो हम इसमें थोड़ा आते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या है।
array count. ठीक है, so I believe array count is nothing but its input that we are giving here. It's 6, right? Yeah, it should be this. So हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे that is int sum which we will give 0. Now what we did for int, अच्छा, did you understood the question guys? Did you guys understood the question? If yes, put an yes in the chat box. हमें करना कुछ नहीं है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू पीपल. स्टार्ट, मेरे पास एक एरे है, उस एरे में डिफरेंट डिफरेंट, I need an iPad man, I need an iPad by the way, by the way. And I just said like there's element 2, there could be an element 3, there could be an element 4, and there would be an element 5, right? अब मैं क्या करूँगा, इन सारे एलिमेंट्स को प्लस करना है मुझे, सिंपली 2 plus 3 plus 4 plus 5, and I will get whatever I want, like 2 plus 2 5 5 5 4 9 9 14 14 I believe, whatever, 5 10, yeah 14, it would be 14. तो मेरे को ये करना है. अब मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ इस डैट की, आकाश हमने लास्ट चीज़ में एक चीज़ समझी, इज दैट व्हाट, दैट मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ 2 3 4 5, राइट? मैं ट्रैवर्स करना सीख चुका हूँ, अब मुझे प्लस करना है. तो मैं अगर ट्रैवर्स कर सकता हूँ तो मैं प्लस कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली ये करूँगा, अभी मैं 2 पे गया तो मैं इसको प्लस करके 3 कर दूंगा ट्रैवर्स करके, तो ये क्या आ जाएगा 5. फिर मैं फिर ट्रैवर्स करूंगा अगले पे जो कि 5 प्लस 4 जो कि वजह बन जाएगा 9, 9 प्लस 5 कर दूंगा, ट्रैवर्स हो गया, क्या हो गया 14. ओह आई कैन डू ट्रैवर्सल हियर, मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट. सो हम कैसे करेंगे, सिंपल है. हमने ट्रैवर्स कैसे किया था, फॉर लूप से, तो हमने क्या कर दिया, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे काउंट. ठीक है, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं आई प्लस प्लस, हमने एक डेटा टाइप बना लिया टू स्टोर द आंसर सम इक्वल्स टू 0. अब मैं क्या करूँगा, सम इज प्लस इक्वल्स टू, इफ यू नो, if you write something like this, sum plus equals to array of I, let's say, it will give you array, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा होता है, sum equals to sum plus array of I. चलो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये चल कैसे रहा है. मतलब हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए कि भैया आपने लिखा क्या. तो ले सपोज एरे आई की जो वैल्यू है दैट इज फॉर नाउ 2, ठीक है. तो अभी क्या हुआ, सम इक्वल्स टू, हमने सम की वैल्यू क्या रखी 0 प्लस 2, ठीक है, क्या हो गया दैट विल 2, राइट. अब मैंने एरे की वैल्यू आई थी वो अपडेट हो गई, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर देखा है हमने एक प्लस प्लस में आई प्लस प्लस कर दिया. तो अब हमारा आई जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, अब दूसरी वैल्यू क्या है 3. तो अब सम की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 2, लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है सम की 2. तो अब सम इक्वल्स टू 2 होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू सम की 2 है, प्लस 3. फिर तो ये हमें क्या मिल गया 5. तो अब सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 5 है. तो अब मैंने कहा कि एरे आई, वापस मेरी एरे की वैल्यू आई है, मतलब आई प्लस प्लस हो गई. अब मैं वापस क्या करूँगा, मेरा आई की वैल्यू एरे ऑफ आई क्या हो गया 4. अब मेरी सम की जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो हो गई 5 प्लस 4, that is equals to 9, and this will continue like this. So this is what we are doing, sum plus equals to array of I, right? And what we will do in the end, we will do return sum. If you have issue in function, if you have any issue in function, put function OG in the comment
so that I will have I will record a session on function. Okay. Do you anyone have any issue in function? I will just print it. Okay, I will just run code once for testing it. Is it working fine? Yes, it's working. And then we will submit the code. And it's done. Simple. Up, dalo, poll. Understood this question? Put your comment, put the poll, and then I will just get it done. I will keep it, then I will count it. Today's session would be considered as done, then we will proceed for another. Please comment if you are till here, if you had watched till here. Okay, people, I believe we are done with today's session. We had completed a one question in non-hacker rank, and we will have a lot of things coming on. So from here now on, I will count this session to be end, and we'll meet you again. I believe if more people will join very soon, it will be more fun. So let's see. But for now, let's count the stream, end it.